इन्नी अतक़र्रबु इलैक बिज़िक्रिका वस्तशफ़िउ बिका इला नफ़्सिक वअसअलुका बिजूदिक अन तुदनियानी मिन क़ुर्बिक व अन तुज़िआनी शुक्रक व अन तुल्हिमानी ज़िक्रक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सुआला ख़ाज़िइन मुतज़ल्लिलिन ख़ाशिइन अन तुसामिहानी व तरहमनी व तजअलनी बिक़िस्मिका राज़ियन क़ानिया वफ़ी जमीइल अहवाल मुतवाज़िआ। अल्लाहुम्मा वअस्अलुका सुआला मान इश्तदत फ़ाक़ातुहु व अंज़ला बिका इंद शदाइदि हाजातुहु व अज़ुमा फ़िमा इंदका रग़बतुहु। अल्लाहुम्मा अज़ूम सुल्तानुका व अला मकानुक व ख़फ़िया मकरुक व ज़हरा अमरुक व ग़लबा क़हरुक व जारत क़ुदरतुक व ला युमकिनुल फ़िरार मिन हुकूमतिक। अल्लाहुम्मा ला अजीदु लिज़ुनूबि गाफ़िरन वला लिक़बाइहि सातिरा वला लिशैइन मिन अमलियल क़बीह बिल हसनि मुबद्दिलन गैरक ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका व बिहम्दिक। ज़लमतु नफ़्सी व तजर्रअतु बिजहली व सकनतु इला क़दीमि ज़िक्रिका ली व मन्निका अलैया। अल्लाहुम्मा मौलाया कम मिन कबीहिन सतरतहु व कम मिन फ़ादिहिन मिनल बलाई अक़लतहु व कम मिन इशारिन वाक़ैतहु व कम मिन मकरूहिन दफ़अतहु व कम मिन सनाइन जमीलिन लस्तु अहलन लहु नशरतहु। अल्लाहुम्मा अज़ुमा बलाई व फ़राता बि सुहाली व कसरत बि अमाली व क़अदत बि अग़लाली व हबसनी अन नफ़ई बिउदु अमली व ख़दाअतनि दुनिया बिग़ुरूरिहा व नफ़्सी बिजनायातिहा व मिताली। या सय्यदी फ़अस्अलुका बिइज़्ज़तिका अन ला यहजुबा अन्का दुआई सू अमली व फ़िआली वला तफ़ज़हनी बिख़फ़िय्यि मा तलअत अलैहि मिन सिर्रि वला तुआजिलनी बिल उक़बा अला मा अमिलतु फ़ी ख़लवाति मिन सूइ फ़िअली व इसाअती व दवामी तफ़रीती व जहालती व कसरती शहवती व गफ़लती व कूनिल्लाहुम्मा बिइज़्ज़तिका ली फ़ी कुल्लिल अहवालि रऊफ़ा व अलैया फ़ी जमीइल उमूरि अतूफ़ा। इलाही व रब्बी मन लिग़ैरुक अस्अलुहु कश्फ़ दुर्रि वन नज़र फ़ी अमरी। इलाही व मौलाया जरैता अलैया हुक्मन इत्तबअतु फ़ीही हवा नफ़्सी वलम अहतरिस फ़ीही बिन तज़यीनी अदुव्वी फ़ग़र्रनी बिमा अहवा व असअदहु अला ज़ालिकल क़ज़ा फ़तजावज़तु बिमा जरा अलैया मिन ज़ालिका बअद हुदूदिक व ख़लफ़तु बअद अवामिरिक फ़लक़ल हम्दु अलैया फ़ी जमीइ ज़ालिका वला हुज्जत अली फ़ीमा जरा अलैया फ़ीही क़ज़ाउक व अलज़मनी हुक्मुक व बलाउक व क़द आतैतुका या इलाही बअद तक़सीरी व इसराफ़ी अला नफ़्सी मुअतज़िरन नादिमन मुनकसीरन मुस्तक़ीलन मुस्तग़फ़िरन मुनीबा मुक़िर्रन मुज़अिनन मुअतरिफ़ा ला अजीदु मफ़र्रन मिम्मा काना मिन्नी वला मफ़ज़अन अतवज्जहु इलैहि फ़ी अमरी गैर क़बूलिक उज़्रि व इदख़ालिक इय्याया फ़ी सआति रहमतिक। अल्लाहुम्मा फ़क़बल उज़्री वरहम शिद्दता ज़ुर्री व फ़ुक्कानी मिन शद्दी व साक़ी या रब इरहम ज़अफ़ा बदनी व रिक़्क़ता जिल्दी व दिक़्क़ता अज़मी। या मन बदा ख़ल्क़ी व ज़िक्री व तरबियती व बिर्री व तग़ज़ियती हबनी लिइब्तिदाइ करामिक व सालिफ़ बिर्रिका बि या इलाही व सय्यदी व रब्बी अतुराका मुअज़्ज़िबी बिनारिक बअद तौहीदिक व बअद मन तवा अलैहि क़ल्बी मिन मअरिफ़तिक व लहिजा बीही लिसानी मिन ज़िक्रिका व अतक़दहु ज़मीरी मिन हुब्बिक व बअद सिद्क़ि इतिराफ़ी व दुआई ख़ादियान लिरुबूबिय्यतिका हैहाता अंता अक़रमु मिन अन तुज़य्यअ मन रब्बैतहु औ तुअबिदा मन अदनैतहु औ तुशर्रिदा मन आवैतहु औ तुसल्लिमा इलल बला मन कफ़ैतहु व रहिमतहु
वलैत शिरी या सैयदी व इलाही व मौलाया तुसल्लितुन नार अला वजूहिन खर्रत लिअज़मतिका साजिदतन वाला अलसूनिन नातक़त बितौहिदिका सादिका व बिशुक्रिका मादिहा वाला क़ुलूबिन इअतराफ़त बिइलाहियतिका मुहक़्क़िक़ा वाला ज़माइर हवत मिनल इल्मी बिका हत्ता सारत ख़ाशिआ वाला जवारिहा सआत इला अवतानी तअब्बुदिका ताइआ व शारत बिइस्तिग़फ़ारिका मुज़इना मा हाक़ज़त ज़न्नु बिका वला उख़बिरना बिफ़ज़लिका अनका या करीमो या रब वांता तालमु ज़अफ़ी अन क़लील मिन बलाअद्दुनिया व उक़बातिहा वमा यजरी फ़ीहा मिनल मकारिहि अला अहलिहा अला अन्ना ज़ालिका बलाअन व मकरूहन क़लीलुन मक़सूह यसीरुन बक़ाहु कसीरुन मुद्दतुहु फ़कैफ़ इह्तिमालि लिबलाइल आख़िरा व जलीली वुक़ूइल मकारिहि फ़ीहा व हुवा बलाउन ततूलु मुद्दतुहु व यदूमु मक़ामुहु वला युख़फ़फ़ु अन अहलिहि लिअन्नहु ला यकूनु इल्ला अन ग़ज़बिक व इंतिक़ामिक व साख़तिक व हाज़ मा ला तक़ूमु लहु अस्समावातु वल अर्ज़ या सय्यदी फ़कैफ़ ली व अना अब्दुका ज़ईफ़ु सलीलुल हक़ीरुल मिस्कीन अल मुस्तक़ीनु या इलाही व रब्बी व सय्यदी व मौलाया लिअय्यिल उमूर इलैका अश्को व लिमा मिन्हा ज़िज्जु व अबक़ी लि आलिमिल अज़ाब व शिद्दतिही अमलितु लिल बला व मुद्दतिही फ़लाइन सय्यरतनी लिल उक़बाति मअ अअदाइक व जमाअत बैनी व बैन अहली बलाइक व फ़र्रक़त बैनी व बैन अहिब्बाइक व अवलियाइका फ़हबनी या इलाही व सय्यदी व मौलाया व रब्बी सबरतु अला अज़ाबिक फ़कैफ़ अस्बिरु अला फ़िराक़िक व हबनी सबरतु अला हर्रि नारिक फ़कैफ़ अस्बिरु अनिन नज़रि इला करामतिक अम कैफ़ अस्कुनु फ़िन्नारि व रजाई अफ़्वुका फ़बिइज़्ज़तिक या सय्यदी व मौलाया उक़सिमु सादिक़ा लइन तरक़तनी नातिक़ा ला अज़िज्जन्ना इलैका बैना अहलिहा ज़ाजिजल आमिलीन वला असरुखन्ना इलैका सुराखल मुस्तसरिक़ीन वला अबकियन्ना अलैका बुक़ाअल फ़ाक़िदीन वला उनादियन्नका ऐना कुन्ता या वलियल मुअमिनीन या गयाता मालिल आरिफ़ीन या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन या ग़ियासल मुस्तग़ीसीन या हबीबा क़ुलूबिस सादिकीन व या इलाहल आलमीन अफ़तुराका सुब्हानका या इलाही व बिहम्दिक तस्माउ फ़ीहा सौता अब्दिन मुस्लिमिन सूजिना फ़ीहा बिमुख़लफ़ातिहा व ज़ाक़ तअमा ज़ाबिहा बिमअसियाति व हुबिस बैना अतबाक़िहा बिजुर्मिही व जरीरातिही व हुवा यज़िज्जु इलैका ज़जीजा मुअम्मिलिन लिरहमतिक व युनादिका बिलिसानि अहलि तौहीदिक व यतवस्सलु इलैका बिरुबूबियतिका या मौलाया फ़कैफ़ यबक़ा फ़िल अज़ाब व हुवा यरजू मा सलफ़ा मिन हिल्मिका अम कैफ़ तुअलिमुहुन नार व हुवा यअमुलु फ़ज़लका व रहमतक अम कैफ़ युहरिकुहु लहिबुहा व अंता तस्मउ सौतहु व तरा मकानहु अम कैफ़ यश्तमिलु अलैहि ज़फ़ीरुहा व अंता तअलमु ज़अफ़हु अम कैफ़ यतक़ल्क़लु बैना अतबाक़िहा व अंता तअलमु सिद्क़हु अम कैफ़ तज़जुरुहु ज़बनिय्यतुहा व हुवा युनादिक या रब्बहु अम कैफ़ यरजू फ़ज़लक फ़ी इत्क़िही मिन्हा फ़ततरुकुहु फ़ीहा हैहात मा ज़ालिका ज़न्नु बिका वलल मअरूफ़ मिन फ़ज़लिक वला मुशबिहुन लिमा अमलता बिहिल मुवह्हिदीन मिन बिर्रिका व इहसानिका फ़बिल यक़ीन अक़तउ लौला मा हकमता बिही मिन तअज़ीबी जाहिदिक
वक़ज़ैत बीही मिन इख़लाद मुआनिदिक लजअलत अन्नारु कुल्लहा बरदन व सलामा व मकान लिअहदिन फ़ीहा मक़र्रन वला मुक़ामा लाकिन्नका तक़द्दसत अस्माउका अक़समत अन तमलअहा मिनल काफ़िरीन मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन अन तुख़ल्लिदा फ़ीहल मुआनिदीन व अंत जल्ला सनाउक क़ुल्ता मुब्तदिअन व ततव्वलत बिल इनआम मुतक़र्रिमान अफ़मन काना मुअमिनन कमन काना फ़ासिक़न ला यस्तवूना इलाही व सय्यदी फ़अस्अलुका बिल क़ुद्रतिल्लती क़द्दरतहा व बिल क़ज़िय्यतिल्लती हतमतहा व हक़मतहा व ग़लबता मन अलैहि अजरैतहा अन तहबली फ़ी हाज़िहिल लैलती व फ़ी हाज़िहिस सआत कुल्ला जुर्मिन अजरमतु व कुल्ला ज़ंबिन अज़नबतु व कुल्ला क़बीहिन असररतु व कुल्ला जहलिन आमिलतु क़तमतुहु व अअलनतुहु अख़फ़ैतहु व अज़हरतहु व कुल्ला सय्यआतिन अमरता बिइस्बातिहल क़िरामल क़ातिबीन अल्लज़ीना वक्कलतहुम बिहिफ़्ज़ि मा यकूनु मिन्नी व जअलतहुम शुहदा अलैया मअ जवारिहि व कुन्ता अंतर राक़ीबा अलैया मिन वराइहिम वश्शाहिदा लिमा ख़फ़िया अन्हुम व बिरहमतिका अख़फ़ैतहु व बिफ़ज़लिका सतरतहु व अन तुवफ़्फ़िरा हज़्ज़ी मिन कुल्लि ख़ैरिन अंज़लतहु औ इहसानिन फ़ज़्ज़लतहु औ बिर्रिन नशरतहु औ रिज़्क़िन बसत्तहु औ ज़ंबिन तग़फ़िरुहु औ ख़ताइन तस्तुरुहु या रब या रब्बे या रब्बे या रब या रब्बे या रब्बे या रब या रब्बे या रब्बे या रब या इलाही व सय्यदी व मौलाया व मालिका रिक्की या मन बियादिही नासियती या आलिमन बिदुर्री व मस्कनती या खबीरन बिफ़क़री व फ़ाक़ाती या रब या रब्बे या रब्बे या रब या रब्बे या रब्बे या रब या रब्बे या रब्बे या रब अस्अलुका बिहक़्क़िका व क़ुद्सिका व अअज़मी सिफ़तिका व अस्माइक अन तजअल औक़ाति मिनल लैलि वन नहार बिज़िक्रिका मअमुरातन व बिख़िदमतिका मौसूला व अअमालि इंदका मक़बूला हत्ता तकून अअमाली व अवरादी कुल्लहा विरदन वाहिदा व हाली फ़ी खिदमतिका सरमदन या सय्यदी या मन अलैहि मुअव्वली या मन इलैहि शक़ौतु अहवाली या रब या रब्बे या रब्बे या रब या रब्बे या रब्बे या रब क़व्वि अला खिदमतिका जवारिही वशदुद अलल अज़ीमती जवानिही व हबली अल जिद्दा फ़ी खशियतिक व दवामा फ़िल इत्तिसाल बिखिदमतिक हत्ता असराहा इलैका फ़ी मयादिनिस साबिकीन व उसरिआ इलैका फ़िल बारिज़ीन वश्ताका इला क़ुर्बिका फ़िल मुश्तक़ीन व अदनुआ मिनका दुनुव्वल मुख़लिसीन व खाफ़का मखाफ़तल मुक़िनीन वज्तमिआ फ़ी जवारिका मअल मुअमिनीन अल्लाहुम्मा व मन अरदनी बिसूइन फ़ारिद व मन क़दनी फ़क़िद वजअलनी मिन अहसानी आबिदिक नसीबान इंदक वक़रा बिहिम मंज़िलतम मिनका व अख़ज़्तिहिम ज़ुल्फ़तन लदैक फ़इन्नहु ला युनालु ज़ालिका इल्ला बिफ़ज़लिक वजुदली बिजूदिक वअतिफ़ अलैया बिमजदिक वहफ़ज़नी बिरहमतिक वजअल लिसानी बिज़िक्रिक लहीजन व क़ल्बी बिहुब्बिक मुतय्यमन व मुन्ना अलैया बिहुस्नि जबातिक व अक़िलनी असरती वग़फ़िर ज़ल्लती फ़इन्नका क़ज़ैता अला इबादिका बिइबादतिक व अमरतहुम बिदुआइक व ज़मिनत लहुमुल इजाबा फ़इलैका या रब्बे नसबतो वजही व इलैका या रब्बे मददतो यदी फ़बिइज़्ज़तिका अस्तजिब ली दुआई व बल्लिगनी मुनाया वला तक़ता मिन फ़ज़लिका रजाई वक्फ़ीनी शर्रल जिन्नि वल इंसी मिन अअदाई
या सरिया रिदा इग़फिर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ फ़इन्नका फ़आलुन लिमा तशा या मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफ़ा व तातहु गिनन इरहम मन रासु मालिहिर रजा व सिलाहुल बुका या साबिगन निअम या दाफ़िअन निकम या नूर अल मुस्तौहिशीना फ़िज़्ज़ुलम या आलिमन ला युअल्लम सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वफ़अल बीमा अंत अहलुहु व सल्लल्लाहु अला रसूलिहि वला इम्मतिल मयामीन मिन आलिहि व सल्लमा तस्लीमन कसीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। Assalamu alaikum, everyone. Just a quick few announcements. Tomorrow, Shabe, tomorrow the Jumma program will start at 1:16 p.m. That's the awal time. And then tomorrow evening we have our bi-weekly session with our Maulana, resident alim. The topic for tomorrow is wisdom of halal and haram food. So please join us 7:30. And then what we'll do is after that, after the namaz, refreshments, there'll be a sports night as well tomorrow night. Next Thursday, the Shabe Jumma program will be at 7:30 p.m. And next Friday, Jumma again will be 1:16 p.m. Can I request Surah Fatiha for Marhum Ghulam Hussain Dirani and Marhuma Zainab Yunisa bint Mir Momin Ali? She passed away today in India. She's the mother of one of our members in the community here. So I've got to request Surah Fatiha for them too and all our Marhumins, please. Bismillah. So if I can request Maulana to come up with your loud salawat, please. Allahumma salli ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير الناصرين ومعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صلوات please اللهم صل على محمد وآل محمد. Ya Ali, doesn't matter what we do, you may bite your tongue, but Quran says, Kullu nafsin dha'iqatul maut. He made me smile by biting his tongue by listening to this ayah. Yes, I want to speak about death today. Hadith says the first stage towards the hereafter is death. And Imam Ali alayhi salam in a beautiful word Salli ala Muhammad wa ala says لِكُلِّ دَارٍ بَابٌ وَبَابُ الْآخِرَةِ الْمَوْتِ. Every house has a door to enter, and the entrance to the hereafter is death. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ.
every single soul must taste death. And most interesting is the next part. Thumma means then, step by step. Thumma ilayna turja'un. Towards us is your return. Death is such an unknown reality, and especially Quran speaks a lot about death, and especially life after death, because we have no access to life after death. Only the creator of it, who created life, Alladhi khalaqal mawta wal hayata, he can tell us how it looks like. Alexis Carrel, a French, he's known as the father of transplant, surgery, died in 1944, 5th of November. He has a beautiful word. He says the way religion gives answers to the questions about life after death, knowledge is mute. Knowledge has nothing to offer, meaning science has nothing to offer in that regard. We want to speak about Ma'ad. I might not be investigating death the way I spoke in 2020 online, about 4 lectures continuous. I want to investigate death today with brevity, with the lens of one of our usuluddin, is Ma'ad. And Ma'ad is the return of soul into our body on the day of resurrection. We spoke briefly in the previous session, but just to give you a heads up, Ma'ad consists of few stages. Number 1 is our death. Then death means qabr. Then barzakh. In barzakh we have few stages, and the conditions of people in barzakh are different. And then we will reach again a resurrection from our graves, coming back to life, and then Allah will gather everybody on the plain of Mahshar, the day of resurrection. That itself has many stages. Number 1, giving of books of deeds to people. Then the pond of Kawthar is there. And then the bridge of Sirat is there. Bridge of Sirat has 50 stages. Major 3 of them. I have a purpose to count and give you a sequence of them so you have in your mind what's about. The final stage is people who will cross the Pul-e-Sirat. Pul-e-Sirat is basically built over the hellfire. People will be in the plain of Mahshar. They have to cross the hellfire through the Pul-e-Sirat to reach the paradise. So basically paradise is on the other side of the Pul-e-Sirat. So if you can just, portray that in your mind. Coming back, these are about 7 stages in general. This week, tomorrow, we will be inshallah discussing the halal and haram food. But in the follow-up session, we will go directly to barzakh, and I won't be speaking about barzakh here because we have lots of questions regarding barzakh. So please bear in mind, we will discuss in about 2 sessions, looking at how it goes with your questions. If you made me busy, maybe we will extend it to 3 sessions, but at least we need 2 sessions. Coming back to discussion of the day, death, the way Quran and a hadith of Ahlul Bayt alayhimus salam put a human face on this vague topic, distinctively and perfectly. No one else, nowhere else, you will see this precious information. Now let me start with a beautiful story. Hazrat Musa alayhi salam was sitting one day. Janab Israel alayhi salam, Israel is the angel of death, appointed to take out souls of people. He came to him. Musa was Nabi Kalimullah. He says, Israel, did you come to visit me? Oh, it's time. He said, it's time. Ya Musa, it's over. I'm here to fetch out or drag out your soul from your body. He says, will you allow me? Surely I just want to say farewell to my family, bid farewell to family. He says, no. There's no gunjayish of bidding farewell.
Hazrat Musa fell into sajda, directly spoke to Allah, invoked him, "Oh Allah, please allow me briefly so I can bid farewell to my family." Allah reveals to Israel, allow him few minutes. Janab Musa hurries to mother, family. He has a son, wife, mother. Says to mother, "Mama, I have a journey ahead of me." She says, "To where?" He says, "To the hereafter." He starts crying. Basically, he informs, then I'm going to die. It's time of my death. And then turns towards the wife. The boy, who's apparently 7, 8 years old, is sitting in the lap of his mother. They start crying. And while Hazrat Musa wants to leave, the boy grabs the daman of Hazrat Musa and starts crying. Of course, Hazrat Musa's heart gets heavy. He also cries. Allah Jalla Shanu reveals to Musa, please pay attention to these steps. He reveals to Hazrat Musa alayhi salam, "O Musa, don't be worried. Rush to me. I will guard your family and I will nurture them with my compassion and love." See, he gets solace and has comfort. Hazrat Israel turns towards him. "Okay, are you ready?" He says, "Where are you going to take out my soul from? I mean, from my body." He says, "From your mouth." He says, "From the mouth I spoke to Allah with." He says, "Okay, I'll take it out from your hand." He said, "From my hand with which I held the tablets of Torah." He says, "Okay, from your feet." I mean, Musa, look how he's compromising always. Seeks for discount. He says, "The feet I used to walk towards Kohetur to speak to Allah." Then Hazrat Israel gives him a very fragrant tangerine. Hazrat Musa grabs it, smells it, and he gives his soul to Israel alayhi salam. Now when he's ascended to the throne, the angels, they say, "Salam, oh, whose soul was taken, the easiest among all the apostles. How did you find death?" Please pay attention to this. These ahadith, look how many details Rasulullah gives us and how much information our religion has provided us with. But hal min muddakir, is there someone to take admonition? This is real. 110% it's going to happen. The news was brought to us by somebody who never ever lied, who gave us true reality of things. So, Ya Musa, how did you find death? This is what he wanted to tell us. This is the cream of the story, the message. He says, "Kashatin tuslahu wa hiya hayyatun." Think of a sheep, female sheep. If it is skinned alive, I found death like that. My death was like that. And the angels, they called him that you who had the easiest death. Let me just find out. Please have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajham ya ahwan al-anbiya'i mautan. Oh, among apostles who had the easiest death, the softest death. How did you find death? See, among all the apostles, we know that how Hazrat Zakaria was martyred. We know how death befell Imam Hussein alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Anyway, so first point, death is something to be scared off of. But is it for believers too? No. What scares people, Quran has a very distinctive view. Believer has a view and non-believer has a view. Non-believers, Allah speaks a lot of times in Quran, like وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. When we will die, faithless they say, "O apostle, when we will die, are we going to be in a new creation? Are we going to come back to life? How is that possible?" And you just heard in Surah Marka Yasin, Abu Jahl, he brought that decayed bone.
قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Who is going to revive it, renew it, while it's powdered now? How can it come back to life? قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي. Allah replies and says to Rasulullah, reply to them, tell them, the one who brought life first time, he will bring them back to life the second time. And this is nothing as compared to creation of, everything else to Allah Jalla Shanu. Have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And sometimes, they mention that قالوا إن هي ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. We'll just live in this world the way we are, and when we die, that's the end of it. And it is time which basically kills us or brings our death to us. And then we won't survive. Allah says, قُلْ Allahu yuhyikum. O Apostle, tell them, Allah will bring you back to life. And then ثُمَّ يُمِيتُكُمْ. And He will again make you die. And then again He will give you life and resurrect you on the day of resurrection. Bring you back to life. Look how Allah gives with serenity these stages. How is it going to happen? And we all know our Imams. Imam Ali was questioned once. Yeah, Ali, you always say that I love death. I am accustomed with death more than a baby is accustomed with the breast of his mother. How is that? Why do you say that? People sometimes they want to check his iman. Sometimes they want to learn. I want to learn. Look how he explains. He says, looking at the altaf, the blessings and bliss of Allah Jalla Shanu in this dunya. He has blessed us with. When I look into this, and then when I think that how is it going to be in the hereafter? By the way, Imam Ali has in his pocket the ayat of Surah Dahr and ayat of, Walayat and other ayat, especially ayat like, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا in Surah Insan or Dahr. This is the peak of the eloquence of the surah. That when their Lord will make them drink the pure wine. Maybe Mawla Ali jaake Allah se peena chahte hain bhai. Look how he loves. Because these endless blessings and bliss of Allah, we cannot attain it until we go in the hereafter stage. And then look, he says, you have been created. وَعَلَمْ أَنَّكَ إِلَّمَا خُلِقْتَ لِلْآخِرَةِ لَا لِلدُّنْيَا إِنَّهُ الْبَلَاغَ. Be known. You have been created for the hereafter, not for dunya. So don't plan and put all of your seeds in this dunya. Plan and deposit everything precious in the hereafter. That is your permanent dwelling. That is where you're going to stay forever, till end of time. Have a salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And when I read this hadith, I'm going to give it to you. This kind of intoxicates me with love and joy. This is from Imam Sajjad alayhi salam. He reports from Rasulullah. He says, Ad-dunya sejunul mu'mini wa jannatul kafir. This world is the prison of believer or for a believer, and a paradise for the faithless. Wal mautu jisru haulai ilal jannah, and the death is the bridge for the believer towards paradise, and death is a bridge for the non-believer to the fire of hell. Look, death is the only obstacle between us and the hereafter before we reach. And as we will discuss in Barzakh, right after our death in Barzakh, people will be of three groups, three types. The ones who had righteous deeds, they were good guys, believers. They will start enjoying those blessings of Allah right there. And then depending on their iman and the position of their heart, the cognition they had, the obedience they had to Allah and Rasulullah, depending upon that level, let me give you Quran.
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. These ayat, they are a masterpiece. Never say to those who have been slain in the way of Allah as dead. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. They are alive, but you cannot sense it. You have no sense of how they are alive, because something which is beyond our perception, beyond our senses, how can we sense it? Allah has not given us that sense which can perceive and comprehend the hereafter's life. But as we believe in Allah, this is what ilmul ghaib is, and this is what iman bil ghaib is. Yu'minuna bil ghaib means they have faith in unseen. Rasulullah gave us this information and we believe it. We never demand proof from him that show me. Show me is the attribute of a non-believer who has no iman bil ghaib. Please have a salawat. Salli ala Muhammad. Such beautifully in Surah Al-Imran again, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Adds more information. Don't even perceive they're dead. No. بَلْ أَحْيَاءٌ, rather they are alive, they're living. عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. They are being given rizq near their Lord. अपने परवरदिगार के हां से रोज ही पा रहे हैं वो. Do I need to know? Or by knowing, will that change? See, there's a lion outside. I know it or I don't. Does that affect the lion being there? It doesn't. It's irrelevant to the lion. It's irrelevant to the reality after our death. What's going to happen? It is reality. I believe it or I don't. It's not going to make any difference. As Imam Razavi says, an atheist said, okay, prove to me there's life after death. Imam says, you eat? He said, yes. Imam says, I eat. You sleep? Yes, I sleep. You live your life the way you do, I live my life. But I live my life with the faith in life after death. You live your life with faith, there's no life after death. With death, everything will end and perish. And let's say we both die. And suppose if your hypothesis, your faith is correct, there's nothing after death, then you don't need to worry about anything. Okay? And I have nothing to lose because everything ended. But if there is question, there is sirat, there is mizan, there is ma'ad, there is book of deeds, there is everything, resurrection, then you are in big trouble. Because you have nothing to offer there then. And no one is to protect you. But I, with my faith in my God, and faith in my apostle, and with my righteous deeds, they are going to help me proceed towards the paradise. Look how nicely, how reasonably Imam rationales with that person. And he is convinced. Have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam Ali has a beautiful hadith, says every breath you take is a step toward death. Every breath we inhale and exhale is one step towards our death. Imam Jawad has a beautiful hadith. Somebody questioned, Ya Ibn Rasulallah, explain to us how is death. Look how he puts a face on this unknown reality to human beings. He says, listen, death is like the normal sleep. We sleep every night. The difference is that death is a longer sleep. We will sleep to the day of resurrection. But adds some information. Others could also say something like this. But what he says tells that this knowledge is from divine source. He says, listen, while in dream, if you have unexplainable joy and blessings being offered to you, and you love them, and then on the opposite, if you have horrific torment being given to you in the dream,
You are dreaded, you are terrified, you're scared, extremely scared. That is how death will treat you depending on your faith. If you are a good guy, you will have good. Good will come to you. And if you were a bad guy, the worst of the worst you cannot even think about, that is going to come to you. But look how he explains that it's like a ख्वाब. जैसे हम नींद आती है हमें हर रोज, ये उसी तरह है. Let me finish with a beautiful story in Al-Wafi. There's an arif always looking to, उर्दू में बयान करूँ इंग्लिश में. I think everybody understands उर्दू here. बहुत बड़े आरिफ थे, वली खुदा. बहुत गौर किया कि एक हदीस पढ़ी है कि यखरुजु रूहुल मुमिन जसदहु, कि मोमिन की रूह जो है उसके बदन से निकलती है, कमा तखरुजु शअरतुल अजीना, कि जैसे डो में से बाल निकलता है आसानी से, आराम से. पूरा कुरान करीम बड़े गौर से, तदब्बर से, बड़ी दिक्कत से पढ़ा. कहते हैं कोई आयत इस माना की नहीं नजर आई, परेशान हो गए. कहते हैं जो हदीस रसूल होती है वो कुरान में ज़रूर मिलता है उसका मफ़हूम, मुझे क्यों नहीं मिला. अब यहीं से पता चला कि मेरे भाई कुरान तन्हा काफ़ी नहीं है, कुरान के साथ एक मुफस्सिर कुरान भी चाहिए जिसको पता हो कि कुरान में क्या क्या है और कहाँ कहाँ है. बड़े परेशान हुए. एक दिन ख्वाब में रसूल खुदा को देखा. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. जनाब ख़त्मी मरतबत ने फरमाया क्यों इतने परेशान हो. कहा या रसूल अल्लाह कुरान में है ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्की कोई तरी ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान में ना हो. तो मैंने ये हदीस जो आपकी, इस पर बड़ा गौर किया कि मोमिन की जान इतनी आराम से निकल जाएगी. तो मैं कुरान में ढूंढता रहा, मुझे मिला नहीं कहीं पर भी. नबी अकरम ने फरमाया सूरह यूसुफ नहीं पढ़ते, सूरह यूसुफ पढ़ो. कि जब वो खवातीन ने देखा जनाब यूसुफ को, फ़इज़ा रअयनहु अकबरनहु, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने उनको बहुत अजीम पाया जनाब यूसुफ को. उसने यूसुफ देखकर इतना गुम हुई उसमें कि अपने हाथ जब काटे उन्हें पता भी नहीं चला कब हाथ कट गए. ठीक है. तो बंदे खुदा, जब तुम अल्लाह ताला की उन अनाम व अकरामात को, अपने मकामात बेहिश्ती को देखोगे तो तुम्हें तुम्हारे जान निकलने का एहसास भी नहीं होगा. और साथ में भला क्या इनाम है, जब तुम चेहरा पुरनूर अली मुर्तज़ा को देखोगे, उस चेहरे की रौनक में ऐसे गुम होगे, तुम्हें मौत कब आ गई उसका एहसास ही नहीं होगा. सलवात पढ़ दीजिए सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. भाई शायद यही वजह है, खुदा की कसम, जैसे हमें आले मोहम्मद ने इनाम व इकराम और उम्मीद और आखिरत में अल्लाह ताला के फजल व करम व शफाअत से उम्मीदवार करवाया है, वैसे ही मौत को रोशनास कराया. यहाँ पर हज़रत ज़ुहैर का वाक़या मेरे जहन में आता है. हज़रत कासिम का एक बयान आपने सुन रखा है. जब जनाब इमाम हुसैन ने पूछा है कासिम कैफ़ल मौत इंदक, कासिम तेरे नज़दीक मौत कैसी है. काला अहला मिनल असल, शहद से मीठी है. कासिम को कैसे मौत शहद से मीठी लगती थी भला? चूँकि कासिम देख रहे थे कि मैं अपने इमाम वक्त की इताअत मुतलक पर जान देना चाह रहा हूँ. देख रहे थे कि मैं इमाम बरहक के साथ यहाँ मौजूद हूँ और ये जालिमीन मेरे इमाम बरहक को मुझसे पहले कत्ल नहीं कर सकते. अली अकबर से पूछा, बेटा जब इमाम आ रहे थे ना तो एक मरतबा इमाम की आंख लगी. अली अकबर ने पूछा, बाबा आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन क्यों पढ़ा? कहा, बेटे मुझे आवाज़ आई कि ये लोग अपनी मौत की तरफ अपने पाँव से चल के जा रहे हैं.
कहा बाबा क्या हम हक पर नहीं है? कहा बेटा बिल्कुल हम हक पर है, अगर हम हक पर ना होंगे तो कौन हक पे होगा? कहा बाबा फिर हमें कोई बात नहीं, मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर आ पड़े। अजीज व इमाम हुसैन से शायद शायर ने इसीलिए लिखा है कि कहाँ से निकालूं मैं जाने हुसैन। इमाम हुसैन ने जब सजदा में सर रखा ना, आखिरी सजदे के लिए शिमर भी आया था, तो इमाम ने फरमाया या शिमर आता आरिफोनी, शिमर मुझे जानते हो मैं कौन हूं? कहने लगा बिल्कुल मैं जानता हूं, तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे हो, फातिमा ज़हरा के बेटे हो, हसन मुजतबा के भाई हो। अजीज़ों जब उसने ये कहा तो इमाम ने आगे से फरमाया फलेमा तक़तुलूनी, तो मुझे क्यों मारना चाहते हो? अजीज़ों जो मैं आपको यहां पर पैगाम देना चाह रहा हूं वो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी मौत का इल्म था, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी मौत को बतमाम रूह, बतमाम बदन, बतमाम शौक़ व तस्लीम और रिदा कबूल किया। ये फरमा कर रिज़न व क़ज़ाइक व तस्लीमन ले अम्रिक अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा जब हमें मौत आए तो रूह बदन जो है वो मौला अली की ज़ियारत करके निकले, जनाब सैयदा इमाम हसन इमाम हुसैन जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करके निकले। मालिक हमारी आक़िबत कार ख़त्म बेखैर फरमा, मालिक हमारे बच्चों को इल्म तक़वा यकीन व ईमान अता फरमा। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज, ए अल्लाह हमारे अमाल कबूल फरमा और हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम मा ज़िक्रे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।